Good morning, candidates. Good morning, candidates. In this video is for Bank of Baroda Substaff to Clerical Interview Tips. एक सबस्टाफ मेंबर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमको चिट्ठी लिखा था, उसको देख के हमको तो बहुत पसंद हुआ। वो इतना अच्छा से क्वेश्चंस पूछा और इसी वजह से हम उसको आंसर करना चाहते हैं। I want to answer questions asked by a candidate and I was really impressed by the questions. ஒரு கேண்டிடேட் வந்து 3 கொஸ்டின் அனுப்பியிருந்தாலும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்பவே நல்லா சிறப்பா இருந்தது. ஏன்னா அது ரொம்ப குறிப்பா இருந்ததுனால அதை ஆன்சர் பண்ணினா மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாகும். கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் இன்டர்வியூ? What are the qualities they expect from interviewees, the interviewers, what they expect? How can I prepare for this interview? இதுதான் questions. Only this many questions were posed by that candidate. Now for that, what I'm going to tell you is that first I would like to go to bankofbaroda.in, that website I would like to go. So using that, I must be able to tell him. So the first question he asked was, say, what are the most important questions they can ask? First of all, the questions will be simply based on the self. Say, a candidate who is going for interview, about him. So पहले questions पूछेगा आपका बारे में, आप कितना क्लास तक पढ़ा है, किस स्कूल में पढ़ा है, और क्या क्या ब्रांच में आपने काम किया है. Likewise, they will ask. Talking in Tamil, or I think I can summarize and tell at one stroke. That will be better. First, let me talk in English, then in Hindi, and also in Tamil. Okay, good. So they will ask, what are the branches you have worked? How did you do the work? Were you able to participate effectively? How did you learn? How were you planning a day for doing the work as a substaff? First question. Then they can ask you, say you have been working in a branch. So have you ever observed what are the duties of a clerical staff? What are the duties of a clerical staff? So you must be able to tell. For example, the clerical staff sits in the counter with a computer. He receives cash. He makes payment of cash. He is debiting checks and for transfer of funds, for making cash payment. And also he is issuing demand drafts. He is issuing fixed deposit receipts. And he is registering nominations. And he is in charge of, he is taking NEFT remittances, RTGS remittances. Likewise, all these things, whatever a clerical staff is doing, you can tell him. Say recurring deposit, fixed deposit, everything he takes. In the case of, say, single window counter, up to 20,000 or so, it may differ from bank to bank. The clerk will make payment of cash, and yeah, that is a thing. Yeah. So these are the things. After that, what questions can we expect related to banking? They can ask simple question like, say, RBI का गवर्नर कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन कौन है, आपका जोनल मैनेजर कौन है, आपका मैनेजर कौन है, कब से आप, so from when are you working in this branch, and what is the deposit of your branch, advance of your branch, what is the branch? They can ask these questions. Okay, once they ask these questions, and once, just a minute, I'll come, I'll just prepare it. Yeah, so they can ask you about I was telling you about the chairman and all that. That's right. Some general personalities they can ask. They can even ask who is the finance minister, who is the prime minister, who is the agriculture minister. Some general questions they can ask like this.
Then regarding say banking questions, what I have noted yesterday is that what is KYC, why KYC, what are the documents taken under KYC. Then what is the classification of branches, what size is your branch, small branch, large branch, etc. Then they can also ask what qualities, what is your long-term goal? Are you interested in preparing for JIB, CIB and all? What is then simple questions which they may not ask. For example, these questions are asked in probationary officer's interview, like what is the difference between a check and demand draft? You people know it, but presenting it is slightly difficult. And tell about debit card, credit card. What is the norms for withdrawal of money through ATMs? Say bank, our own bank ATM, other bank ATM. What is meant by CTS? How clearing of checks is handled by bank clerks and officers. When a customer wants to avail personal loan, what is the procedure? How much loan is granted against your bank deposit? What is the percentage of loan given? What is the interest rate charged? Simple questions they can ask like this. Yeah, and simple questions like this. अभी हम इस बात को हिंदी में बोलते हैं. आप जनरली आपका बारे में क्वेश्चंस पूछेगा, आप कहाँ ब्रांच, किस ब्रांच में काम किया है और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, इसका बारे में पूछ सकते हैं. और आपका काम कैसे चलाते हैं. इसका बाद में आपको बैंक का चेयरमैन कौन है, आपको जोनल ऑफिस का हेड कौन है, और बाद में आपको क्लरिकल जॉब का क्लरिकल ड्यूटीज क्या है ये भी पूछ सकते हैं. इस समय पर आप बोलना है क्लरिकल स्टाफ क्या काम करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, पासबुक एंट्री करते हैं और पासबुक एंट्री करते हैं. इसका अलावा व्हाट इज ही डूइंग, लाइक इशूइंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स और रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब काम बैंक क्लर्क ने करता है. देन क्वेश्चंस कैन बी KYC का नॉर्म्स क्या है, वो क्यों KYC नॉर्म्स ऑब्जर्व करते हैं, इसका बारे में पूछेगा. आपका ब्रांच का साइज क्या है, लार्ज ब्रांच ना मीडियम ब्रांच, ये पूछ सकते हैं. देन कस्टमर को कैसे रिसीव करेंगे, कैसे उनको रिसीव करके अच्छा सर्विस देंगे, और आपको लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप क्या JIB CIB एग्जाम लिखेंगे, और चेक और डिमांड ड्राफ्ट का डिफरेंस क्या है, डेबिट कार्ड का बारे में बोलो, क्रेडिट कार्ड का बारे में बोलो, ATM में कितना बार विड्रॉ कर सकते हैं, और CTS का मतलब क्या है, क्लियरिंग ऑफ चेक्स काम कैसे चलता है, ये तो आप लोग जानते हैं. व्हेन पर्सनल लोन लेने के लिए प्रोसीजर क्या है, गोल्ड लोन लेने के लिए प्रोसीजर क्या है, बैंक डिपॉजिट का ऊपर में लोन लेने का प्रोसीजर क्या है. ये ऐसा आप ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So this is what it is. I will tell about these things in Tamil if necessary in a separate video. Thank you.